Welcome back, dear student. Today we have lecture 3 in maxima and minima. And in today's lecture, we will do applied problems in maxima and minima. Now, what are these applied problems? Till now, you have seen the problems in this topic, maxima and minima, where formula for the function is given and we have to maximize or minimize. But now today you will see the problems where direct formula for the function is not given. Word problems are given where some quantity is given and some another quantity we have to maximize or minimize. For example, I have written the first problem. Find two positive numbers whose sum is 24. So sum 24 है, it is given to us. Keeping it in mind, we have to show that product is maximum. क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द नंबर्स. सम इज 24. सम 24 गिवन है. तो नाउ क्वेश्चन उठता है कि जो मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे वो हम किस पे करेंगे? तो आप इसको देखो, जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो वी विल go for process of maxima minima on product. Using the information sum is 24, we will apply the process of maxima minima on product and our job will be to find numbers. So remember, we have to find the numbers keeping in mind product is maximum. तो product maximum है, ये हम prove करेंगे. हमें नंबर्स को निकालना है, बट नंबर्स को निकालने के साथ ही साथ वी मस्ट प्रूव प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओनली देन आवर जॉब विल बी कंप्लीटेड. सो आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम. लेट नंबर्स रिक्वायर्ड आर x and y. So now what is given to us? Given to us x plus y is equal to 24. Let product of numbers be capital P. So P is equal to x into y. We have P is equal to x into y. We have to maximize P. P is equal to x into y. We have to maximize P. But now there is a problem. P has how many variables? X and y both are variable, and the process of finding maxima minima we know is applicable only when we have our function in terms of one variable. There are two variable, so we cannot differentiate, क्योंकि हम differentiation करते हैं with respect to one variable करते हैं. यहाँ पे x और y दो variable है. तो remember, in such kind of applied problem, this will happen every time. जिस पर आपको maximum minima apply करना है, उसके अंदर एक से ज्यादा variable होंगे. तो what will you do? Using the given information, every time you will reduce your function in terms of single variable. So I am going to write, since x plus y is equal to 24, so P is equal to x into 24 minus x. P is equal to 24x minus x square. Now the first derivative, dp by dx, 24 minus 2x. So dp by dx is equal to 0. X is equal to 12. As soon as we get x, we can also get y, and y is 12. We have x plus y is equal to 24. So putting x equal to 24, y is also 12. Now, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट हम यहाँ पे आके गड़बड़ करते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट है टू फाइंड द नंबर्स. नो डाउट वी हैव फाउंड द नंबर. But remember, job is not completed yet. आपसे कहा गया था नंबर्स निकालिए, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो until and unless you prove product is maximum, job is not completed.
एग्जाम में प्रॉब्लम आया, आपने यहां पे करके छोड़ दिया, यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। आपकी जॉब है नंबर निकालिए अंडर द कंडीशन प्रोडक्ट मैक्सिमम। सो वी विल हैव टू प्रूव प्रोडक्ट मैक्सिमम ऑल्सो। फॉर दैट डबल डेरिवेटिव, and double derivative is how much? 0 minus 2, it is negative. Double derivative negative आ गया, it means P is maximum. Product P is maximum. Is it? So we have got our numbers 12 and 12 where product is maximum. Clear? Now the next problem. Next problem, find two positive numbers, find two positive numbers x and y whose sum is 35 and x square into y to the power 5 is maximum. We have to find two numbers x and y such that their sum is 35 and the expression x square into y to the power 5 is maximum. So what we have to maximize or minimize this time? We have to maximize x square into y to the power 5. What is given? X plus y equal to 35. So in this problem, what will we say? Given x plus y is equal to 35, let p is equal to x square into y to the power 5. Now we have to maximize p. We have to maximize p. So now there is p is equal to x square into y to the power 5. Once again same problem, x and y both are variable. For maxima minima we do the differentiation, but because of two variable we cannot do the differentiation. So using the information given, we will convert expression into single variable. So since x plus y is equal to 35, so p is equal to x square into 35 minus x raised to the power 5. Now we will go for process of maxima minima. So first derivative, u into v, so x square into differentiation of v 5 times 35 minus x raised to the power 4 into minus 1 plus differentiation of x square 2x into 35 minus x raised to the power 5. Now we will make first derivative 0. So making first derivative 0, I will get x time 35 minus x raised to the power 4 minus 5 into x minus 5x plus 2 times 35, 2 times 35 minus x, so 70 minus 2x is equal to 0. So from here, I will get x is equal to 0, x is equal to 35 and 70 minus 7x, x is equal to 10. Getting it? Now 0 लेंगे नहीं, 35 लेंगे नहीं. Why? अगर आप, क्योंकि आपको बोला गया था नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए. x को अगर 35 ले लोगे, x को 35 ले लोगे, x प्लस वाई 35 है. x को अगर 35 लिया तो y 0 हो जाएगा. दैट इज नॉट अलाउड. The one and only one value of x is allowed, that is x is equal to 10.
and if x is 10 then how much y? Y is 25. X is 10, y is 25. So हमारी प्रॉब्लम थी टू फाइंड पॉजिटिव नंबर x एंड y. वी हैव फाउंड द वैल्यूज बट जॉब इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड. व्हाई? बिकॉज हमें नंबर निकालने थे मैक्सिमाइजिंग द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5. तो अनटिल अनलेस हम कैपिटल P को मैक्सिमम प्रूव ना कर दें, जॉब इज नॉट डन. सो आई वापस चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? वी हैव dp by dx is equal to x into 35 minus x is to the power 4 into 70 minus 7x. This is our first derivative. Now मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के दो मेथड होते थे. डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ कर लीजिए, या फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ कर लीजिए. दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना एक टिपिकल जॉब होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा. तो उससे बचने के लिए मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए first derivative test. So what will we do here? In the name of first derivative test, we will check sin of dp by dx. और dp by dx का साइन कहाँ पे देखेंगे? 0, 10, 35. 0, 10, 35. 35 से बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव, 10 और 35 के बीच का नंबर रखने पे नेगेटिव, 0 और 10 के बीच का नंबर रखने पे पॉजिटिव, और 0 के पहले का कोई नंबर रखने पे लेट्स से -1 जी पॉजिटिव. क्या फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था. अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आई एम चेकिंग. सो देयर इज नो साइन चेंज एट 0, देयर इज नो साइन चेंज एट 35. There is sign change at 10. There is sign change at 10. और 10 पे साइन कैसा चेंज हो रहा है? प्लस से माइनस. फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस होने पे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा. सो क्लियरली P is maximum. Clearly P is maximum. We have got P is maximum. Since derivative sign plus से minus change हो रहा है, so clearly we have maximum. Okay? Next. चलिए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं. Next problem is prove that all the rectangles with a given parameter, prove that among all the rectangles with a given perimeter, prove that among all the rectangles with given perimeter, square has the largest area. Prove that among all the rectangles with a given perimeter, square has the largest area. चलिए वीडियो पॉज करिए, जिनको लगता है बना सकते हैं they must do it. वीडियो पॉज करके
पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए, फिर जब नहीं बना तो मेरा सॉल्यूशन देखिए. सो prove that among all the rectangles with a given perimeter square has the largest area. तो ये जो आपकी बात टर्म है largest, largest means what? Maximum. तो we have to prove area maximum. मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो अब की बार मैक्सिमम मिनिमा में किस पे अप्लाई करना है? एरिया पे. किसके एरिया पे? रेक्टेंगल के एरिया पे. दे आर सेइंग for given perimeter of a rectangle, square will have largest area. First thing आपको ये पता होना चाहिए, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल. सबसे पहले रेक्टेंगल पाए जाते हैं. अब रेक्टेंगल की साइड अगर इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है. तो वी विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम टेकिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हम प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे रेक्टेंगल का एरिया लेके. नाउ उस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाते हुए अगर रेक्टेंगल की साइड इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू प्रूव रेक्टेंगल will have largest area when it is square. So we will start our problem with area of rectangle. उस पे हम मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करेंगे. रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आने के लिए अगर साइड इक्वल हो गई तो यानी रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा. वी हैव टू प्रूव रेक्टेंगल स्क्वायर व्हेन एरिया इज मैक्सिमम. सो हियर इन दिस प्रॉब्लम I am starting in this manner. Let sides of rectangle are x and y. Let sides of rectangle are x and y. Now let perimeter be P. So P is equal to 2 times x plus y. Here P is constant. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिए, इट इज द इंपॉर्टेंट वन. प्रॉब्लम में बोला गया है गिवन पेरीमीटर, तो मैंने पेरीमीटर के नाम पे कैपिटल P नाम का सिंबल लिया. नाउ दिस कैपिटल P विल वर्क एज अ कांस्टेंट. प्रॉब्लम में बोला गया है गिवन पेरीमीटर, सो द सिंबल फॉर पेरीमीटर कैपिटल P विल वर्क एज कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन. अब मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लेंगे? A is equal to x into y. What we have to do? We have to maximize A. Now the same problem. Area has how many variable? 2 variable. And for the process of maximum minima, we must have 1 variable. So now from here, we will take information. P is equal to 2 times x plus y. Since P is equal to 2 times x plus y, so area A is equal to x into P by 2 minus y. Now area A is equal to P into x by 2 minus x square. In place of y, I have put P by 2 minus x. So now, first differentiation dA by dx is equal to P by 2 minus 2x. Remember, since P is given, so P is constant. प्रॉब्लम में आपको बोला गया है पेरीमीटर इज गिवन,
So we will take it constant. That's the reason डिफरेंशिएशन करते समय मैंने डिफरेंशिएशन किसका किया, x का. Now first derivative 0. First derivative 0. What does it imply? It implies x is equal to p by 4. X is equal to p by 4. Now the relation between x and y, p is equal to 2 times x plus y. p is equal to मैं x is equal to क्या मिला, p by 4. That I am putting here. तो p is equal to 2 times x plus y. तो y कितना होगा, y will be p by 2 minus x. x आ चुका है p by 4. So मैं यहां लिख दे रहा हूं y is equal to p by 2 minus x. In this way y is equal to p by 4. So we are getting x and y both same. X equal to p by 4, y equal to p by 4. So since x is equal to y, so rectangle is square. Since x is equal to y, so rectangle is square. क्वेश्चन में बोला गया था prove that among all the rectangles with a given perimeter square has the largest area. So एरिया पे जब हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना चालू किया तो वी आर गेटिंग साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल सेम. सो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, बट जॉब इज नॉट कंप्लीटेड येट. हमसे कहा गया था कि रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, प्रूव करिए प्रोवाइडेड एरिया इज मैक्सिमम. तो जब तक हम एरिया को मैक्सिमम प्रूव नहीं कर लेते हैं, जॉब इज नॉट डन. सो नाउ आई विल फाइंड डबल डेरिवेटिव. नाउ d2a upon dx square. How much? 0 minus 2 is equal to negative. Double derivative is coming negative. It implies that area A is maximum. So in this way we are able to prove area of rectangle maximum as well as rectangle is a square. प्रॉब्लम में बोला गया था प्रूफ करिए फॉर गिवन perimeter of rectangles square will have greatest area. That means for given perimeter largest area will come maximum only when rectangle is square. If perimeter is given, then area will be maximum only when rectangle is a square. So that we have done. Taking area of the rectangle, we have applied process of maxima minima, and what are we getting? We are getting sides of rectangle same as well as area maximum. It means rectangle has maximum area when it is a square. Okay. Now students, we have our new problem. Prove that among all the rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area. So you can say problem has some similarity with the previous problem, but there was only rectangle and perimeter given. This time rectangle inscribed in a circle of given radius. The meaning of given circle means radius of circle is known to us. So मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ. Let radius of circle is r. और मैंने लिखा since circle is given, so r is constant. सर्कल की रेडियस r को हम लोग कांस्टेंट लेते हुए प्रॉब्लम को करेंगे. सो बोला जा रहा सर्कल हैविंग रेडियस r, वी हैव सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल में रेक्टेंगल, और लेट्स से
it has radius r, where sides of the rectangles are x and y. Sides of rectangle are x and y. Circle, so let sides of rectangle are x and y. अब डायग्राम में देखो, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस साइड इज x, दिस इज y, हाइपोटेनियस. सो यूजिंग पाइथागोरस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. From the diagram, clearly x square plus y square is equal to hypotenuse 2r square. Now, area of rectangle, we denote it by A. Area of the rectangle x into y. Since we have to maximize A. Now area has two variable x and y, तो पहले हमें सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना होगा. हाउ? सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, सो एरिया A इज इक्वल टू x इंटू रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. Here clearly radius r is constant. Fine. So now from here we will start our process of maximum minima. So we will differentiate it. But student, जब आप differentiation करोगे तो u into v apply करोगे. Because of square root differentiation में दिक्कत आएगी. Because of square root differentiation दिक्कत करेगा. तो now here I am going to tell you a very important thing जो कि आपको आगे के प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेगी. मैंने ये लिखा, in place of maximizing A, we can maximize A square because A is maximum, because A square is maximum implies that A is maximum. Getting me? We have to maximize A, so we will differentiate A, but because of square root, differentiation will cause some problem. So what I am going to do, in place of A, I am taking A square, and the process of finding maxima minima I am going to apply on A square. In place of A, I will like to maximize A square. Why? Because for A square there will be no square root. So now A square is equal to 4r square x square minus x to the power 4. So we will apply the process of finding maxima minima on A square. Now differentiation of A square, it will be 4r square into 2x minus 4x cube. Differentiation of A square is equal to 0. It will imply 2r square is equal to x square. 2r square is equal to x square. So x is equal to root 2r.
We know the relation between x and y. X square plus y square is equal to 4r square. So putting x is equal to root 2r here. Y will also come root 2r. Now, what are x and y? X and y are sides of rectangle. Since we are getting x and y same, so yes, rectangle is square. Rectangle is square. Now, double derivative. This was our first derivative. So, double derivative, it is 8r square minus 12x square. We have got the value of x, putting it here. Clearly, this is coming negative. It implies that a square is maximum when x is equal to y is equal to root 2r. It implies that area A is maximum when rectangle is square. We have got x is equal to y. We have got x is equal to y. We have got x is equal to y. So clearly, the rectangle is square. Since we have got x is equal to y, so clearly our rectangle is a square. So we are talking about rectangle inscribed in a given radius is square when its area is maximum. Okay. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले. चलिए, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. नोट हो गया? So student, now we have our new problem where this time we have a wire of length 36 meter cut into two pieces. One of the pieces is converted into a square, other is converted into a circle. Now we are talking about minimum area of combined entity. That means minimum area for area of square plus area of circle. तो मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा में कहां अप्लाई करना है? मैक्सिमम मिनिमा वी हैव टू अप्लाई ऑन कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल plus area of square. So first of all, we have a wire of length 36 meter. It has two pieces x and y. We have wire of length 36 meter. Wire of length 36 meter. Now one of the pieces is converted into a square, other is converted into a circle. Let's say, let piece of length x is to be converted into square. That means जो बनने वाला स्क्वायर होगा उसकी जो साइड हो जाएगी x by 4, x by 4, x by 4 and x by 4. So side of square is equal to x by 4. स्टूडेंट बात समझ, इसको पहले समझिएगा. आई हैव अ वायर ऑफ लेंथ x. मैंने x लेंथ के वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. तो जो x है, ये जो मेरा x वाला पीस है, इससे मैंने स्क्वायर बना दिया. तो जो x लेंथ है वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर की पेरीमीटर हो जाएगी. आपने x लेंथ के वायर को पकड़ के स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगी दैट विल बी इक्वल टू x. तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? x by 4, x by 4, x by 4. मैं यहां लिख दे रहा हूं
perimeter of square is equal to x. जो हमारा x वाला पीस है उससे हमने स्क्वायर बना दिया. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू x. नाउ and piece of length y is to be converted into a circle. ठीक है, into a circle. हमारा जो दूसरा वाला पीस है उससे हम लोग सर्कल बना रहे हैं. हमारा जो दूसरा वाला पीस है उससे हम लोग सर्कल बना रहे हैं. एंड सर्कल ऑफ हाउ मच रेडियस दैट वी हैव टू डिसाइड. जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में बोला था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसी तरह से यहां बोलेंगे circumference of circle equal to y. circumference of circle equal to y. जो हमारा y वाला पीस है, y वाले पीस से हमने सर्कल बना दिया. y वाले पीस को हमने पकड़ के सर्कल बना दिया, तो y हमारा कहाँ चला गया? सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे. तो circumference of circle is equal to y. circumference of circle is equal to y. So 2 pi r is equal to y. It implies that r is equal to y upon 2 pi. r is equal to y upon 2 pi. Fine. So हमने एक स्क्वायर बना दिया. बनने वाले स्क्वायर की साइड क्या? x अपॉन 4. बनने वाले सर्कल की रेडियस y अपॉन 2 pi. 2 pi r is equal to y. तो r is equal to y upon 2 pi. Now given is what? X plus y is equal to 36. Let combined area of square and circle be A, capital A. So capital A is equal to area of square plus area of circle. Now we know that area of square is what? Side square, and area of circle pi r square. In this way A is equal to x by 4 square plus pi r square. R is how much? Y upon 2 pi square. So A is equal to x square by 16 plus y square upon 4 pi. X square by 16 plus y square upon 4 pi. We have to, प्रॉब्लम में बोला गया था क्या? Area is minimum, so we have to minimize. We have to minimize A. Now A is equal to x square by 16 plus y square upon 4 pi. Fine. Now we have to apply the process of maximum minimum on capital A. So we will have to differentiate it. But because of x and y two variable, right now we cannot do the differentiation. So what to do? We should convert it into one variable using the relation x plus y is equal to 36. So in place of y,
मैंने पुट कर दिया 36 माइनस एक्स, सिंस x plus y is equal to 36. Now I am going to do the differentiation. So dA by dx is equal to 2x by 16 plus 2 times 36 minus x upon 4 pi into minus 1. Now first derivative is equal to 0. So 2x upon 16 is equal to 2 times 36 minus x upon 4 pi. So in this way, pi x is equal to 144 minus 4x. So x is equal to 144 upon pi plus 4. X is equal to 144 upon pi plus 4. 144 upon pi plus 4. We will put it here. X plus y is equal to 36. So y 36 minus x. Calculate it. So 36 minus pi 144 upon pi plus 4. LCM लोगे LCM लोगे तो कितना आ जाएगा? 36 पाई प्लस 144. चेक करो. तो आई होप ये आपका आएगा 36 पाई अपॉन 144. 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4. 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4. 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4. ना ठीक है. सो वी हैव गॉट x एंड y. हमें x और y निकालना था, बट until unless we prove area is minimum, job is not done. So now double derivative d2a upon dx square. ये d by dx आ गया था, d2 by dx square how much? 2 by 16 plus 2 upon 4 pi डिफरेंशिएशन ऑफ 36 माइनस एक्स माइनस 1 और एक माइनस 1 पहले से. सो क्लियरली d2a upon dx square is positive. It implies that area A is minimum. It implies that area A is minimum. So in this way, we are able to prove combined area minimum, and we have got values of two pieces x and y. Okay. Okay. Now students, we have a new problem. A square piece of tin of side 24 centimeter, and we are making a open box from it, cutting square from each corner. So first we have a square piece of tin of side 24 centimeter. We have square piece of tin of side 24 centimeter. क्या? थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं जिससे square piece of tin of side 24 centimeter. Now we are cutting square from each corner. According to problem, we are cutting square from each corner. So overall side is 24 centimeter, and let square we are cutting of side x. We are cutting square of side x. Let square of side x
is cut from each corner. क्या अब इसको समझिएगा. ये पोर्शन, ये जो स्क्वायर है, ये आपने कट करके निकाल दिया, ये आपने कट करके निकाल दिया. अब ये जो फ्लैप्स बच रहे हैं इनको आपने फोल्ड किया, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, टू हैव अ एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ दिस बॉक्स. मिठाई का डब्बा सोचो कि मिठाई का ओपन डब्बा, तो इस वाले फ्लैप को ऊपर किया, इस वाले फ्लैप को ऊपर किया, इस वाले फ्लैप को ऊपर किया और इस वाले फ्लैप को ऊपर किया. अब ऐसा सोचो कि ये जो साइड, ये स्क्वायर्स हमने कट कर लिया, ये वाली साइड कि ये स्क्वायर हमने अलग कर लिए. हाँ क्या, चलो ये जो मैंने बनाया था ये स्क्वायर मैंने अलग कर दिया. नाउ जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो अब इसमें जो फ्लैप्स दिख रहा है, इन फ्लैप्स को हमने इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, तो वी आर गेटिंग बॉक्स. हाँ बताओ ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड कितनी रह गई? इट इज 24 माइनस 2x. सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो ये वाली साइड हमारी कितनी बची? 24 माइनस 2x. x इधर से निकला, x इधर से निकला, तो 24 माइनस 2x. We are talking about volume of box. Volume of box, let's say it is V. अब वॉल्यूम होगा क्या? आपका ये जो बॉक्स बनेगा, इट विल बी अ क्यूबाइड, तो जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी LBH. तो L 24 minus 2x, B is also 24 minus 2x. बट हाइट क्या होगी? देखो ये जो फ्लैप है, जब आपने इस फ्लैप को फोल्ड किया तो जो हाइट आएगी वो फ्लैप की हाइट आएगी, और फ्लैप की हाइट मतलब x. सो इन दिस वे वॉल्यूम इज व्हाट? 24 minus 2x whole square into x. Getting it? Now, for first differentiation, dv by dx, how much? U into differentiation of v plus differentiation of u into v. So now dv by dx is equal to 24 minus 2x whole square minus, I will get 4x 24 minus 2x. 24 minus 2x common, so then 24 minus 2x, 24 minus 6x. First derivative 0. So it will give me x is equal to 12 or x is equal to 4. X is equal to 12, x is equal to 4. Now we cannot go with x is equal to 12. इसमें बताइए why? We cannot go with x is equal to 12. Simple. 24 minus 2x. अगर x 12 हुआ, if x is 12, then this 24 minus 2x will be 0. x को अगर मैंने 12 ले लिया तो ये 24 minus 2x 0 हो जाएगा, which is impossible. So x cannot be 12. Then we have to prove volume of the box is maximum. So this is my first derivative. Now to prove volume maximum, double derivative d2v upon dx square. d2v upon dx square, it is 24 minus 2x into minus 6 plus minus 2 into 24 minus 6x. We have to check double derivative at x is equal to 4. So let's check it. Putting x is equal to 4, आप कैलकुलेट कर लेना
इट इज नेगेटिव. जब आप x की जगह 4 रखोगे ये नेगेटिव आएगा, x की जगह आप 4 रखोगे तो ये आपका 0 चला जाएगा. We have it implies that volume V is maximum for x is equal to 4 सेंटीमीटर. क्या हमसे पूछा गया था what should be the side of the square cut so that volume of the box is maximum. So our answer, side of the square to be cut is 4 centimeter and we are getting volume maximum. Clear? Now students, we have problem related to mensuration. Problem on cylinder, problem on cone. So see the problem. What is given? Height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. So this capital R will be known to us here in this problem. A sphere of radius capital R where capital R is known. I have inscribed cylinder of height h and radius small r. Let cylinder has height small h and radius r. Now it is very clear that height of the cylinder will be bisected at center of sphere. So this will be h by 2. This will be h by 2. So I am writing h by 2 square plus small r square is equal to capital R square. Using Pythagoras, small h by 2 square plus r square is equal to capital R square, where capital R is constant. Here capital R is a constant. Now what we have to maximize? We have to maximize volume of cylinder. So formula for volume of cylinder क्या लेंगे? Pi r square h. But r and h both are variable. We have to maximize V. So we will differentiate V. But small r and small h both are variable. So using the given relation, since h square by 4 plus r square is equal to capital R square, so V is equal to pi. In place of small r square I am putting capital R square minus h square by 4 into h. So V is equal to pi capital R square into h minus pi by 4 small h cube. Differentiate. So dV by dh is equal to pi times capital R square minus 3 by 4 pi h square. Now dV by dh is equal to 0. It implies pi times capital R square is equal to 3 by 4 pi h square. Clearly from here, small h is equal to 2 times capital R by root 3. That is height of the cylinder 2 times capital R by root 3. और यही हमें प्रूफ करना था कि height of the cylinder 2 times capital R by root 3. So we have proved that, but problem is not completed yet. Volume maximum. So until and unless we prove volume maximum, the job is not completed. So now I am finding double derivative. So d2v by dh square. Pi r square 0 because capital R is constant, minus 3 by 4 pi 2h. It will be clearly negative. It will be clearly negative. Why? Because height is positive, so it is clearly negative. So we are getting double derivative negative. We are getting double derivative negative. Double derivative negative, it implies that volume V is maximum.
it implies that volume V is maximum. So हमें प्रूव करना था volume of the cylinder is maximum when height of the cylinder 2 times capital R by root 3. So we have found height 2R by root 3 as well as we have proved volume is maximum. Clear? Okay. Now students, we have new problem, and this time you can see we have cone inside the sphere. We have to show that volume of the largest cone. What's the meaning of largest cone? Greatest volume. Largest cone means maximum volume. That can be described in a sphere of radius capital R. This capital R is known to us. It will be treated as constant. 8 by 27 of the volume of the sphere. So here we have cone inside the sphere. Capital R radius of the sphere is given, and we have to prove that volume of the cone is 8 by 27 of volume of the sphere, keeping in mind volume of cone is maximum. So we have to apply the process of maxima minima on what? On the volume of cone. We will maximize volume of the cone. What is known to us? Capital R, radius of the sphere. I have taken small h, height of the cone, small r, radius of the cone. Now small h, small r, they will work as variable. Capital R, constant. Now, इससे पहले जो प्रॉब्लम किया था वहां पे स्पेयर के अंदर क्या था? स्पेयर के अंदर सिलेंडर था, और सिलेंडर की हाइट क्या थी? स्पेयर के सेंटर पे बाइसेक्ट हो रही है. सेम विल नॉट हैपन हियर. इस बात का ध्यान रखना. आपकी जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट स्पेयर के सेंटर पे बाइसेक्ट होगी. आंसर है नो. व्हाट विल इट बी? इट विल बी h माइनस आर. कोन की हाइट है, कोन की हाइट क्या ले रखी है? h. स्पेयर के सेंटर के ऊपर कितना है? कैपिटल आर. तो स्पेयर के सेंटर के नीचे कितना बचा? h माइनस आर. सो आई एम अज्यूमिंग लेट height and radius of cone be small h and small r respectively. Capital R radius of sphere is constant. Now, volume of cone, let's say capital V, 1 by 3 pi small r square into h. Here in this problem, we have to maximize this volume, but V has small r, small h, both the variable, and we know that differentiation is allowed only when there is one variable. So we will have to get a relation between small r and small h. How? So now, from the diagram, इसको देखिए. This right angle triangle. This right angle triangle, Pythagoras here. Hypotenuse is capital R. This side is small h minus capital R. What about this side? Small r, radius of the cone. So I am going to write capital R square is equal to small h minus capital R square plus small r square. So now volume V is equal to 1 upon 3 pi. R square we can replace with capital R square minus small h minus capital R square into small h. In this way, volume V is pi by 3. इसको आप ओपन कर लीजिए. It is R square minus h square minus R square minus 2RH, तो माइनस मिलकर प्लस 2 कैपिटल R H. बाहर एक H है. So
v is equal to pi by 3, we can take h common, या h को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 times capital R h square minus h cube. Now this is formula for volume where only one variable is there, that is small h. फिर से मैं लिख रहा हूँ, या पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, सो पाई बाई 3 टाइम्स इट विल कम 4 times capital R into h minus 3h square. Remember, capital R is constant. Capital R is constant. At the time of differentiation here, we have differentiated only small h and we have taken capital R constant. So after differentiation, 4 times capital R into h minus 3h square. Now, first derivative 0. Now, first derivative equal to 0. So dv by dh is equal to 0. It implies that 4 times capital R into small h is equal to 3 times small h square. We can cancel h with h. So in this way, small h is equal to 4 times capital R by 3. So we have got height of the cone. We have got height of the cone 4 by 3 times radius of the sphere. एग्जाम में प्रॉब्लम ये भी आ सकता था कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द कोन 4 by 3 times radius of the sphere. तो we are getting that h is equal to 4r by 3. But we do not have to prove it. We have to prove that volume of the cone is 8 by 27 volume of the sphere. So now this is small h. What will be small r? That's the relation between h and small h and small r. So using this relation, I am going to get small r. We have got h is equal to 4r by 3. Put it here. 4r by 3. 4r by 3 minus r will make r by 3. उसका square, r square by 9. R square minus r square by 9. 8r square by 9. That is the value of small r square. Taking square root, we will get 2 root 2 capital R by 3. That's the value of small r. So now, volume of cone V is equal to 1 by 3 pi r square h. We will put the values. So r square 8 by 9 capital R square small h 4 times capital R by 3. So in this way it is making 8 by 27. It is making 8 by 27 4 by 3 pi R cube. 8 by 27 मैंने अलग कर दिया, तो now it is 4 by 3 pi R cube, which means 8 by 27 volume of sphere. We know that formula for volume of sphere. क्या होता है sphere का volume? 4 by 3 pi radius cube. That is there 4 by 3 pi r cube. Now, तो हमें प्रॉब्लम में प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ द कोन 8 by 27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वी हैव डन दैट, बट जॉब इज नॉट कंप्लीटेड. मैंने आपको बताता चला आ रहा हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में दो काम करने होते हैं. एक तो जो प्रूफ करना होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते ही आ जाता है, एज वेल एज जिसके साथ मैक्सिमाइज मिनिमाइज टर्म यूज होता है वो हमें दिखाना भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम में बोला गया था लार्जेस्ट कोन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कोन वी हैव टू शो मैक्सिमम. तो वो काम अभी बाकी है. सो नाउ डबल डेरिवेटिव. नाउ डबल डेरिवेटिव d2v अपॉन dh स्क्वायर.
This is first derivative. So double derivative is pi by 3 times 4 times capital R minus 6h. We have value of small h 4r by 3. 4r by 3. That will make 8r. Overall, it is negative. It implies that volume V is maximum. It implies that volume V is maximum. Okay? So ये जॉब हम लोगों ने एक्स्ट्रा करी. Finding double derivative, we are proving that volume of cone is maximum. So दो काम करने थे. कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाते हुए हमें ये प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सक्सेसफुली वी हैव डन दैट. इज इट? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. Given surface, height of the closed cylinder given surface and maximum volume is equal to the diameter of base. So now here in this problem, no sphere, no cone, simply we have cylinder. और कैसा सिलेंडर है? क्लोज सिलेंडर, जिसके बारे में बोला जा रहा गिवन सरफेस. तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम some information is given, using that some quantity we have to maximize or minimize. So here given surface और maximum word किसके साथ यूज हुआ है? Volume के साथ. So here in this problem we will maximize volume of the cylinder, keeping in mind surface is given. Now what is the meaning of surface? Surface area. अब जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं. एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया. सो इफ द वर्ड कर्व्ड इज गिवन, you will go with curved surface area. Only surface is given, you will always go with total surface area. So here we will go with total surface area. So problem में बोला गया है cylinder So I am taking a cylinder okay. I am taking a cylinder of height small h, radius small r. Let height and radius of cylinder be small h and small r respectively. Right? Let surface area be capital S. So capital S is equal to 2 pi r h plus pi r square. 2 pi r square. क्लोज्ड सिलेंडर की बात की जा रही है, तो जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ अबव क्रॉस सेक्शन एंड लोअर क्रॉस सेक्शन. तो दैट इज ऊपर का कितना? ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर, बॉटम वाले का पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या लेंगे?
2 pi RH plus 2 pi R square. Here S is constant. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिएगा, दैट्स द मेन पॉइंट. कैपिटल S is constant. Why? Because capital S is surface area which is given to us. जो हमें given होता है उसे हम constant लेते हैं. Now, volume of cylinder V is equal to volume of cylinder V is equal to pi r square h. Volume of the cylinder pi r square h. That is the volume of the cylinder. Now the problem is what? Here small r and small h both are variable. Small r and small h both are variable. So we will have to reduce them into one variable. How? Using this one. So V is equal to pi. I am taking the value of h from here. Pi r square in place of h. Capital S minus 2 pi r square divided by 2 pi r. So now volume V is equal to pi cancel. So r by 2 times S minus 2 pi r square. Further I can write V is equal to r S by 2 minus pi r cube. So now we have to maximize volume V. First differentiation. So dV by dr is equal to S by 2 minus 3 pi r square. S is constant. Clear? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए. At the time of differentiation, we have taken capital S constant. First, I have eliminated one variable using the relation from surface area. I have put small h in terms of r. So now there is only one variable r. Capital S is constant. So differentiation dV by dr. Now we will make first derivative 0. So dV by dr is equal to 0. What does it imply? It implies S is equal to 6 pi r square. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया तो हमें S की वैल्यू आ गई. अब आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम लोगों ने इससे पहले की है, मेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव 0, हमारा रिजल्ट आ जाता था जो हमें प्रूफ करना होता था. Here in this problem we have to prove height of the cylinder is equal to diameter of the base. Making first derivative 0, we are getting value of the surface area. We are not getting the result. We have to prove. So now what to do? In place of S, we will put 2 pi r h plus 2 pi r square. So this will make 2 pi r h is equal to 4 pi r square. Now clearly h is equal to 2r. So this is our result which we have to prove. Height is equal to diameter of the base. Now एक स्टेप बाकी रह गया, क्या? डबल डेरिवेटिव to prove that volume is maximum. So d2v upon dr square. d2v upon, this is dv by dr. Now d2v upon dr square. S by 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 pi r square का 6 pi r. Clearly r is radius, positive होगा, so double derivative is negative. So in this way volume V is maximum. अपने को बोला गया था considering maximum volume, prove that height of the cylinder is equal to diameter of the base. So we have done two things. We have got height is equal to diameter as well as maximum volume. Is it? Doubt any? देखिए
Such kind of problems are new to you. It will take time. सेम प्रॉब्लम को आप दो तीन तीन बार अटेम्प्ट करिएगा. केवल ये सारा प्रैक्टिस का खेल है. और जितनी भी प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में आपको करा रहा हूँ ऑल आर फ्रॉम योर स्कूल बुक, फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम यूजुअली बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है. तो हर एक प्रॉब्लम को टाइम दीजिए, दो तीन तीन बार रिपीट करिए. एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट है जो बार बार फॉलो हो रहा है. Now I'm coming to the new problem. Okay. This time I am taking prove that semi-vertical angle of the semi-vertical angle of a right circular cone of given surface and maximum volume is sin inverse of 1/3. प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है. स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने का चांस रहता है. सो व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज? वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ व्हाट? कोन. व्हाट इज गिवन? गिवन सरफेस. दैट मींस सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन टू अस. सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया. द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया, total surface area is given. So we have to consider cone. So let height of the cone is small h, radius of the cone is small r. Right? एक टर्म मैं और ले रहा हूं, L. In cone we have a third term which is called slant height, that is L. So let height, radius and slant height of cone B small h, small r and small l respectively. Let total surface area be capital S. So capital S is equal to टोटल सरफेस में क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर. हियर S is constant. Okay. Capital S, we will take it constant. Now we have to maximize volume. So now volume of cone V, how much? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Now there are two variables r as well as h.
There are two variables R as well as H. So it's our duty to eliminate one of the variables. So first I'm going to use here. So from here we can put the value of R square, but then H will create a problem. R and H both are variable. Remember, L is also variable. Slant height. Slant height L is also a variable. So what to do? मैं ये कर रहा हूँ. Since L square is equal to R square plus H square, that we know. Pythagoras. This is H, this is R. So using Pythagoras, L square is equal to R square plus H square. So H will be root over L square minus R square, and then I will use it here. So H is equal to root over. Now I can get the value of L from here. L की value क्या आएगी? S minus pi R square upon pi R whole square minus R square. स्टूडेंट कैलकुलेशन से मत डरिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी खास मैं नहीं कर रहा. ये रिलेशन होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, मैंने L की वैल्यू सरफेस एरिया के फॉर्मूले में से ला के रख दी. नाउ H इज इक्वल टू रूट ओवर S स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 माइनस 2 पाई S R square, and it will come pi square R square, so minus pi square R to the power 4, denominator pi square R square. We can cancel these two. So now height H is equal to root over S square minus 2 pi S R square upon pi square R square. H is equal to S square minus 2 pi S. इसको हम लोगों ने यहाँ पे L की वैल्यू हम लोगों ने ला के रखी क्या, S माइनस पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R. सो डिनोमिनेटर एलसीएम पाई स्क्वायर R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके पाई स्क्वायर R टू द पावर 4. इसको आपने खोला तो क्या मिला, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर. तो नाउ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी हैव गॉट अ फॉर्मूला बिटवीन स्मॉल h and small r. Now this formula of small n and small r I am going to use in volume. V is equal to 1 by 3 pi r square h. So now V is equal to 1 by 3 pi R square. In place of H, root over S square minus 2 pi S R square divided by pi square R square. So now, this is our formula for volume. And you can see there are how many variables? There is only one variable R. Why? Because S is constant. So now we can go for differentiation, but because of this under root, differentiation will take time. तो अब मैं ये कहने जा रहा हूं, since V square is max implies that V is max, so in place of maximizing V, we can also maximize V square. So V square is equal to pi square R to the power 4 by 9 into S square minus 2 pi S R square divided by pi square
r square. Are you getting me? Now we can cancel pi square with pi square. So now clearly v square is equal to r square by 9 into s square minus 2 pi s r square. So v square is equal to r square s square by 9 minus 2 pi s r to the power 4 by 9. Okay. So differentiation of v square with respect to r, 2r s square by 9 minus 8 pi s r cube by 9. Making first derivative 0. 2r s square by 9 is equal to 8 pi s r cube by 9. We can cancel 9 with 9. We can cancel 9 with 9. We can cancel 1 s. So now I'm going to get s is equal to 4 pi r square. S is equal to 4 pi r square. We know that s is how much? Pi r l plus pi r square. So in this way, pi r l is equal to 3 pi r square. So L is equal to 3r. L is equal to 3r. हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल. वी हैव टू प्रूव सेमी वर्टिकल एंगल. सो आई एम राइटिंग if semi-vertical angle is alpha, then sin alpha is equal to semi-vertical angle is alpha, then sin alpha is equal to r by l. It implies that sin alpha is equal to 1 by 3. It means alpha is equal to sin inverse 1 by 3. So we are able to prove semi-vertical angle sin inverse 1 by 3. Semi-vertical angle alpha is equal to sin inverse 1 by 3. So now one job is left, that is to prove volume is maximum. To prove volume is maximum, so double differentiation of v square. Double differentiation of v square, it will come 2s square by 9 minus 8 pi s by 9 3r square. So 2s square by 9 minus 24 pi by 9 s r square. I can take s by 9, s by 9 common, it is 2s, s by 9 common, so 2s minus 24 pi r square. So s by 9 और s हमारा कितना निकला था? s is 4 pi r square, तो s की जगह 4 pi r square, तो 8 pi r square minus 24 pi r square. It is clearly negative. It is clearly negative. So we are getting double differentiation negative. We are getting double differentiation negative. We are getting double differentiation negative. So क्या बोलेंगे? It implies that v square is maximum. And since v square is maximum, so v will also be maximum. And V means volume of the cone. So yes, we are able to show that volume of the cone is maximum using the information
given surface area. We have proved volume of the cone maximum using given surface area. Is it? So student, with this I am completing today's lecture. Today we have done a number of problems. Once again I am saying, go through each problem 2 to 3 times. फर्स्ट टाइम आप इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, कई चीजें आपको लग रहा होगा नहीं समझ में आ रही हैं. ये स्कूल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, बार बार इनको रिपीट करिए. देन मैं अपनी स्कूल बुक में से भी प्रॉब्लम्स को करिए, पैकेज में से प्रॉब्लम को करिए. 100% you will find yourself comfortable. Is it? So, okay, thank you.